कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी की पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो हम जो बात करने वाले हैं ZOO302 के बारे में। इसका भी नाम डायवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स वगैरह है ना, मैं नाम पूरा लिखना भूल गया था। ठीक है, थंबनेल पे देख लेना, वही सिलेबस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमने इसके और भी वीडियोज़ डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास इसके पुराने क्वेश्चन पेपर वगैरह हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर सेंड कर सकते हो, हम आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कर देंगे। और जब भी आप इस बार एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम के बाद भी आपको आंसर की वगैरह चाहिए होगा तो उस सिचुएशन में भी आप अपने पेपर हमको सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। तो सेडिमेंटेड बॉडी या कॉर्डेट्स का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, द नोटोकॉर्ड इन कॉर्डेट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच जर्म लेयर। तो वह मेसोडर्म से बनता है। ठीक है, हेमिकॉर्डाटा was previously considered a subphylum of Chordata because of the presence of स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, बैलेनोगोलस बिलोंग टू विच क्लास ऑफ हेमिकॉर्डाटा। तो ये आपके इंट्रोपेंड्यूशा से बिलोंग करता है, दूसरा ऑप्शन सही है। द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन बैलेनोगोलस इज, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। The body of Balanoglolus is divided into 3 classes: proboscis, collar and trunk। ठीक है, respiration in Balanoglolus occurs through किससे होता है, गिल्स से होता है। ठीक है, the larval stage of Balanoglolus is called, उसको क्या बोलते हैं, टोरनेरिया बोलते हैं लार्वल स्टेज को। द टोरनेरिया लार्वा ऑफ बैलेनोगोलस रिजेंबल्स द लार्वा ऑफ इचिनोडर्म्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। द स्टोमा कॉर्ड इन बैलेनोगोलस इज अ फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ गट। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब फाइला। तो ये 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फाइलम ऑफ कॉर्डाटा। तो हेमिकॉर्डाटा यह कॉर्डाटा का सब फाइलम नहीं है। ठीक है, द हार्ट इन बैलेनोगोलस इज एब्सेंट, सर्कुलेशन बाय मस्कुलर ब्लड वेसल से होता है। ठीक है, The nervous system in Balanoglolus is both dorsal and ventral। ठीक है, Balanoglolus is commonly known as acorn worm। The habitat of Balanoglolus is marine, burrowing in sand। ठीक है, fertilization in Balanoglolus is एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन बैलेनोगोलस इज क्लोज टाइप। द प्रोबोस्किस पोर इन बैलेनोगोलस ओपन्स इनटू प्रोबोस्किस कोलोन। ठीक है, द गिल्स स्लिट इन बैलेनोगोलस आर लोकेटेड इन ट्रंक रीजन। ठीक है, द ब्लड इन बैलेनोगोलस इज कलरलेस होता है। द प्रोबायोसिस स्केलेटन इन बैलेनोगोलस इज मेड ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, द कोइलम इन बैलेनोगोलस इज इंट्रोकोलम। ठीक है, फीडिंग मैकेनिज्म इन बैलेनोगोलस इज फिल्टर फीडिंग। ठीक है, द हैप्टिक
cecum in Balanogalus is an outgrowth of intestine. ठीक है. Regeneration capacity in Balanogalus is high, can regenerate lost parts. ठीक है. The gons in Balanogalus are located in trunk region. ठीक है. The classification of phylum Chordata up to class include which of the following classes under Vertebrata? तो Cytostomata, Piscus, Amphibia, Reptile, Aves and Mammalia. ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है. Which theory explain the origin of chordates from echinoderm like ancestors? तो echinoderm theory बोलती है. ठीक है. The post-anal trail in chordates is important for locomotion के लिए important होता है. Balanogalus shows closer affinity with chordate through perennial gill slit. ठीक है. The dorsal hollow nerve cord in chordates develop from ectoderms. ठीक है. In Balanogalus, the direction of blood flow in the dorsal vessel is कैसा होता है वो आपका anterior to posterior होता है. ठीक है. The collar region in Balanogalus contains mouth opening. ठीक है. Tornaria larva metamorphoses into adult Balanogalus through gradual transformations. ठीक है. The glomerulus in Balanogalus is associated with heart sinus. ठीक है. Which of the following is a characteristic feature of phylum Hemichordata? तो वो टर्मिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. तीसरा ऑप्शन सही है. The food grove in Balanogalus is located on ventral side of proboscis. ठीक है. Asexual reproduction in Balanogalus occurs by fragmentation and regeneration. ठीक है. The relationship between Hemichordata and Chordata is considered sister group with common ancestors. Next, Branchiostoma, that is Amphioxus, belong to which subphylum? तो Cephalochordata से belong करता है. The common name of Amphioxus means sharp at both ends. The habitat of Branchiostoma is shallow coastal marine waters. The notochord in Branchiostoma extends from anterior tip to posterior tip. ठीक है. The feeding mechanism in Branchiostoma is filter feeding. The wheel organ in Branchiostoma is located around the mouth. The number of gills slit in adult Branchiostoma is approximately 100 to 200. ठीक है. The atrium in Branchiostoma is a peripharyngeal cavity. ठीक है. The circulatory system in Branchiostoma is closed without a heart. The blood in Branchiostoma is colorless without respiratory pigment. ठीक है. The excretory organ in Branchiostoma are protonophortria. ठीक है. तीसरा ऑप्शन सही है. The haptic cecum in Branchiostoma is an outgrowth of intestine. The endostyle in Branchiostoma is located on the ventral side of pharynx. Branchiostoma exhibits what type of segmentation? तो pseudo segmentation in muscle only. The nerve system in Branchiostoma consists of
dorsal hollow nerve cord without distinct brain. हर्डमैनिया बिलोंग टू विच सबफाइलम? तो ये आपके यूरोकोडोटा से बिलोंग करता है. द बॉडी ऑफ एन एडल्ट हर्डमैनिया इज कवर्ड बाय टेस्ट ट्यूनिक. In adult Herdmania, the notochord is present only in larval tail. The habit of adult Herdmania is sessile, that is attached to substrate. The two openings in adult Herdmania are कौन सा? Incurrent and excurrent siphons और एट्रियल एंड ब्रांचियल एपर्चर. दोनों ही सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी. द फीडिंग मैकेनिज्म इन एडल्ट हेडमानिया इज फिल्टर फीडिंग. द फैर्नेक्स इन हेडमानिया इज मॉडिफाइड इनटू ब्रांचियल बास्केट विथ न्यूमरस गिल स्लिट. ठीक है. नेक्स्ट, the heart in Herdmania is a simple tubular structure. The remarkable feature of blood circulation in Herdmania is a reversal of blood flow direction. The excretory organ in Herdmania are accumulation of waste in renal vesicles. The neural complex in adult Herdmania consists of a single cerebral ganglion and neural gland. The larva of Herdmania is commonly called tadpole larva. The tadpole larva of Herdmania possesses all four coded characters. ठीक है. Retrogressive metamorphosis in Herdmania refers to loss of advanced coded features during development to adult. ठीक है. नेक्स्ट, द इंडोस्टाइल इन हर्डमानिया इज होमोलोगस टू विच वर्टिब्रेट ऑर्गन? तो थायराइड ग्लैंड. फर्टिलाइजेशन इन हर्डमानिया इज एक्सटर्नल इन सी वाटर. द myotome, that is a muscle segment in branchiostoma, are arranged in V-shaped or chevron-shaped bands. The oral chyli in branchiostoma function in sensory reception and filtering large particles. Headstack pit in branchiostoma is considered homologous to pituitary gland. The peripharyngeal band, that is a ciliated band in branchiostoma, help in moving food from endostyle to epibranchial groove. The gond in branchiostoma are located in segmental arrangement along the body wall. The cerebral vessel in branchiostoma contains a pigment spot and olfactory pit. The class of Urochordata to which Herdmania belongs is कौन सा क्लास है वो? एसिडिसिया क्लास है. Asexual reproduction in some tunicate occur by budding. The epidermis in adult Herdmania is a non-clated simple epithelium. Class Picus is divided into how many subclasses? तो 3 classes में divide होते हैं. Which of the following is a characteristic feature of class Amphibia? तो dual life, aquatic larva and terrestrial adult. The heart of a reptile is typically 3-chambered with an incomplete ventricular septum. Which of the following is a poisonous snake? तो cobra poisonous snake है. The fangs in poisonous snake are modified maxillary teeth. In a
Gyphos dentition, the fangs are fixed at the point of upper jaw. Solio-Japhon dentition is found in vipers. ये भी क्लास के स्नैक ही है. Non-poisonous snake can be identified by absence of fang, presence of row or teeth. ठीक है. Neoteny refers to neoteny, retention of larval characters in a sexual mature adult है. Pediogenesis is reproduction in a larval or juvenile stages. ठीक है. The most common example of neoteny is axolotl. Migration in birds is primarily controlled by photoperiod and hormonal changes. The phenomena where birds travel from breeding ground to wintering ground is called seasonal migration. The Arctic tern is famous for longest migration route among birds. Thecodont dentition in mammals means teeth embedded in sockets. Dipodontic dentition means two sets of teeth in a lifetime. Heterodont dentition refers to teeth of different shape and functions. The dental formula of humans is 2123 2123. Carnivorous mammals typically have well-developed canines and carnassial teeth. Herbivorous mammals typically have well-developed molars and premolars with flat grinding surface. ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही. मिलते हैं अगले क्लास में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.